Good morning, guys. Today we are solving the problem binary search tree violation group pairs. So, what are the pairs violating a binary search tree? So, we can see that to understand the BST properties, first we have to understand like what are the rules for the binary search tree. We can't go deeper into this problem if we don't know the rules of the binary search tree. So, let's dive into the rules. First of all, binary search tree hota kya hai? So, it's a tree which has a parent and the child is subdivided into another child and so on. So what we can see is like बता रहा है कि अगर suppose एक tree है with n nodes and we have to find the pairs which are violating the BST property. मतलब we have to find those pairs जो कि ये rules follow नहीं करता है. So let's go with the rules. So rules क्या क्या है? First rule is that every node is greater than its left child and less than its right child. So अगर हम लोग देख सकते हैं ये वाला example में 10, 50, 40 फर्स्ट रूल को पकड़ते हैं ठीक है सो सपोज इन द पेयर 50, 10 और 10, 50 every node is greater than its left child and less than its right child. So 10 is 50 greater than its so is 10 greater than its left child 50 no. So first these two pairs are violated. 10 is greater than 50, it is not less than 50 क्योंकि हम लोग देख सकते हैं 10 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट चाइल्ड है 50 और 10 के रिस्पेक्ट में राइट चाइल्ड है 40. Now next come, every node is greater than maximum value of its left subtree and less than the minimum value of its right subtree. So अगर हम लोग देखें 40, 30 में 40 should be lesser than the right child value. अब ये पता कैसे चलेगा? आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट एक आर्बिटरी ट्री गिवन रहेगा उसमें जो सेकंड थ्योरम ये बता रहा है कि every node is greater than the maximum value of its left subtree. So 40 ये जो 10 है ना 10 has to be greater than 40. So यहाँ पे भी it is violating. 40 has to be greater than 30. यहाँ पे भी it is also violating. So in 40, 30 pair you can see 40 is not less than 30. That's why it is violating. We can see clearly every node is greater than the maximum value of its left subtree and less than the minimum value. और लास्ट हाइपोथेसिस क्या बता रहा है कि द मैक्सिमम इन द लेफ्ट सबट्री मस्ट बी लेस देन द मिनिमम इन द राइट सबट्री. सो ये जो मैक्सिमम इन द लेफ्ट है जो 50 है ये राइट साइड की बाकी एलिमेंट से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए. So 50 is lesser than 40? No. So यहाँ पे भी it has failed. So it means ये mismatch हो गया एक pair. 50 और 20 assume करके अगर we go, again 50 is greater than 20. So this pair is falling down. 50 and 30 is here. So is 50 greater than 30? No. So again this pair is not matching. So ऐसे करके total pairs which are violating the BST we have to find that. The pairs which are violating the binary search tree we have to find that. And there are total 5 pairs as of this graph which are violating the BST. लेट्स गो विद द सेकंड ट्री और द सेकंड इनपुट ट्री 6. अब हम लोग देख सकते हैं कि पहले इनपुट n इक्वल्स टू 6 है. व्हाट इज n इक्वल्स टू 6? सो n इज इक्वल्स टू 6 इज बेसिकली ओवर हियर number of nodes. So you can see 1, 2, 3, 4, 5, there's 6, there's total 6 number of nodes. Okay, understood. So इसमें बता रहा है कि क्या क्या पेयर्स वायलेट कर रहे हैं. सपोज 40 और 80 में आएंगे अगर 40 और 80 में is the pair violating the binary search tree? Carefully देखो, no, it is not because the element 80 is greater than 40. Understood. 80 और 30 में it is violating. Yes, it is violating because greater than its right child. जो 80 एलिमेंट है ये 30 से ज्यादा बड़ा है. That's why ये कौन सा थ्योरम में आता है? Every is greater than its left child is less than its right child. तो आप हम लोग देख सकते हैं कि 80 is not less than its right child 30. That's why it is violating. So 80 and 30 is also violating. Let's come with the second tree which is violating. Let's take 80 and 70. 80 and 70 is also violating. क्योंकि 80 and 70 में बता रहे हैं कि greater than the node on its right side. So 80 and 70 में 80 is greater than the nodes on its right side. Yes. So the node on its right side is 80 and it is greater than 70. Yes, it is violating. What else is violating? 80 and 60. 80 and 60. 80 and 60 maybe yes. 80 is greater than 60, so it's violating. What are the node on 60 right side? Okay. 30 and 60. Let's take the subdivided roots. 30 and 60 में अब हम लोग चेक करें कि the value of 3 is 30 is not more than its left child. So अगर हम लोग देखें कि जैसे लेफ्ट चाइल्ड में 40 से 80 ज्यादा होना चाहिए इसमें भी 60 ऊपर होना चाहिए था 30 नीचे होना चाहिए था. दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज लाइक इट्स अ मिसमैच. लास्ट 40 एंड 30. सो अगर 40 और 30 में से दोनों में कंपेयर करके देखिए द वैल्यू इन द लेफ्ट सब ट्री इज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ द राइट सब ट्री. ये भी नहीं मैच कर रहा है. बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैज टू बी लेस दैन द मिनिमम वैल्यू इन द राइट. So these are the binary search tree algorithms or the logics which we have to abide in order to find the pairs which are violating this BST. अब आप लोगों के अंदर क्वेश्चन हो सकता है कि ये पेयर्स ये रूल्स किसने हाउ इज द रूल्स अकम. सो दिस रूल्स आर लाइक मेड व्हेनेवर एन एल्गोरिथम इज मेड. दिस रूल्स आर लाइक proved by theorems and mathematical inductions. So let's go with the problem statement. First we can see that there is a constructor class
नोड कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में हमने दिस डॉट डेटा करके डेटा को इनिशियलाइज किया है, और एक ग्लोबल वेरिएबल में हम लोग डेटा लेफ्ट नोड राइट राइट नोड को लिया है। लेट्स टेक अ वैल्यू के जो कि हमारी एरे की इंडेक्स को अपडेट करेगा, और एक काउंटर सी इक्वल्स टू 0 जो कि बाइनरी ट्री की नंबर ऑफ पेयर्स मिसमैच फाउंड होने के बाद उसकी ट्रैक रखेगा। उसके बाद वी आर गोइंग टू मेक एन एरे ऑफ साइज n, एंड वी आर गोइंग टू मेक ऑल्सो अ फंक्शन इन ऑर्डर जो क्या करेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में बाइनरी सर्च ट्री को ट्रैवर्स करके इसकी वो निकाल के देगा। सो लेट्स मेक इन ऑर्डर, और इसमें एक फंक्शन बना दें इन ऑर्डर रूट। सो इसको कैसे करेंगे, इसको स्टैटिक डिफाइन करेंगे। स्टैटिक वॉइड इन ऑर्डर इज द फंक्शन, और इन ऑर्डर के अंदर व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी आर पासिंग, वी आर गोइंग टू पास अ नोड पैरामीटर, वी आर गोइंग टू पास एन एरे, और इसमें फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक कि अगर कोई रूट में वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तब, तो उस कंडीशन में रूट इक्वल्स टू नल होगा, तो हम लोग डिफॉल्ट रिटर्न करेंगे। और अगर नहीं होता है तो हम लोग इन ऑर्डर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड की वैल्यूज को सर्च करने के लिए, एक बार राइट साइड की वैल्यूज को सॉर्टेड ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। सो पहले लेफ्ट साइड को हम लोग सॉर्ट करेंगे, इसलिए लेफ्ट डॉट ये हो गया, और अगर ये हो जाता है तो वी विल अपडेट द ट्रैक ऑफ द एलिमेंट्स रूट डॉट डेटा। तो बेसिकली इंडेक्स जब अपडेट हो जाएगा तब वी कैन ऑल्सो ट्रैक द एलिमेंट्स जो कि लेफ्ट साइड में सब्सिक्वेंटली सॉर्टेड होके और उसके अंदर मिसमैच फाउंड कर रहा है। एल्स इन ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट डॉट राइट कॉमा ARR। अब let's come back to this question. इस पे what we are going to do is we are going to pass in order, पे what are we going to pass? We are going to pass the values root and ARR which we have taken from the user. तो user will provide n input number of pairs जब ले रहे हैं तो वो भी user को ही देना पड़ेगा, so we have to take that. Now we have to traverse to the elements, so int I equals to 0 basic stuff, I less than equals to n minus 1 तक, और I plus plus, और इसके अंदर एक इनर लूप जे लूप जो कि int j equals to I plus 1 से लेके लेस देन n। In this inner loop we are going to check कि the first value of the in array is greater than the adjacent value। अगर ये हो जाता है तो we will increase the counter of the mismatch pairs, and then we will finally return the counter. So this is our while loop, for loop, and we have to close one more, which is a static function, static int pairs violating. Yeah, I guess our program is complete. एक बार we should execute it. Static void in order in class 143. Static void ये static void in order, let's write it as this. Plus solution. So guys, you can see that the binary search tree has been updated and the problem is currently working now. So basically there were some extra spaces in the code, that's why it was not working. I will again compile it and run and check for you, so to check whether it's working or not. It's compiling. The internet is a bit slow over here. With the test cases we have to check even the test cases whether they have passed. Oh, time limit exceeded. Program is taking more time, just ignore it. I've submitted the code because my device is lagging in some way. So you can see it's correct. My submission was correct. 4 marks. The same problem I basically did. So yeah, this is the same problem I basically did. Sometimes the
CPU also lags, and that's the reason because your core exceeds the time limit. Hope you like this video and looking forward to see you tomorrow with the next video.